Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. And padine lecture ke umanga explain ko fundamental types of main memory. Main memory overview to namaki main memory or primary memory is classified in three types of main memory as well as secondary memory. Main memory is a classification shape three types ki number 1 chida internal memory da do RAM de and then some ROM de ROM ho some type plus chida main memory da ठीक है. इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी इंटरनल प्रोसेसर के जिसम से कमी इस्तेमाल के मतलब अगर डायरेक्टली एक्सेसिबल चाहता प्रोसेस था उदा से एक्सट्रीमली फास्ट ठीक था. नंबर 1 टू टाइप मेन मेमोरी नंबर कैश मेमोरी द एंड रजिस्टर द कैश एंड रजिस्टर चाहिए द इनसाइड प्रोसेसर अवेलेबल और बाहर हम जमसा द प्रोसेसर ना अवेलेबल मतलब कैश मेमोरी बाहर हम जमसा द प्रोसेसर ना अवेलेबल we. Number 1 is the cache memory. So the cache pronouns the cache memory is extremely fast static RAM. Extremely fast static RAM मतलब दारा चीज़ हमसे मतलब सही electricity मतलब refreshing पदी के नहीं just information सकी साथी without refreshing दिखता. It is built into the computer central processing unit or CPU or located next to the separate chip. This is built in the computer central processing unit or CPU के availability था और located next to the separate chip. या the CPU ने बाहर चले पर यो separate chip की सही नमसे availability. The CPU use cache memory to store instruction data repeatedly required to run program. बकशानी CPU था the instruction ज़रूरत ही जिससे क्या का process की again and again instruction repeatedly required to process हो. CPU use cache memory नुस्से इस्तेमाल cache memory इस्तेमाल ची information से की process की improving overall system speed. Improving overall system speed दे पत्रों से की the system overall कम speed चीज़ से की improve की ठीक है. This memory is mainly used to store some activity portion of the main memory RAM when only information required. So this memory is mainly used to store some active portion of the main memory. दर्शन द कैश मेमोरी चीज़ हम से एक्टिव पोर्शन मतलब था कि कम इंफॉर्मेशन सीपीयू तो पर ज़रूरत है ना अगर इंफॉर्मेशन एट अ टाइम पे अगर माने से एक्टिव प्रेम बने एक्टिविटी दा नो अगर इंफॉर्मेशन स्टोर कई व्हेन एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर दिस विल लुक अप इन द कैश मेमोरी कुछ तो प्रोसेसर तो इंफॉर्मेशन ज़रूरत है द प्रोसेसिंग द पर द कम से की गुरी पर कैश की गुरी ठीक दा पर कैश की भी गुरी then it will look in the cache memory and is not available in the cache then it will fetch from the RAM. Because the cache is available नहीं नुचाने पे राउडी तो RAM ने पे राउडी ठीक था. It will fetch from the RAM. These are three level of the cache memory. Level 1 cache, level 2 cache, and level 3 cache. So three type the main memory. Now tool नमक की जमसे level 1 cache था. Level 1 cache is a built into the actual processor. उस level 1 cache processor के availability it is piece of the high speed memory. जमसे के level 1 चीज़ high speed memory था ठीक था. Which operate at the same speed as CPU. The CPU at the same speed of the CPU से की operate की is directly accessible the computer processor directly accessible the computer processor and hold data that the processor need to execute instruction. और दाखिल instruction से के store के चिकन processor की ज़रूरत है. उस मतलब directly accessible से मतलब directly accessible मतलब दारे जिधर CPU की inside से की सही available. It is the fastest memory and closest to CPU but even expensive and small in size. Fastest memory दा ठीक दा और closest memory is the CPU दा मतलब extremely expensive home दा and small in size मतलब the 8 number 16 20 32 64 और 128 KB पर इसमें से this size की रेशियो ठीक दा. हाँ next हम से दे level 1 2 cache. Level 1 2 cache pull information from the system main memory. दाखिल level 1 cache चिदा information से ना कहीं level 2 cache the information से ना कहीं push के pull कहीं the main memory ना which is accessible by the level 1 cache memory चाका मतलब चाहते accessible level 1 cache memory. It resembles past memory bigger in size and less expensive than L1. Size किसी ज़मीन सा घटा ही ठीक था. For speed की ज़मीन से कम है is a compare of L1 cache memory that it is normally 64 KB to 16 MB. 64 नवाले the 16 MB पूरे देर size ही. The purpose of the L2 cache is to constantly read slightly larger quantity of data from RAM. Was the purpose of the L2 cache is constantly read the slightly large quantity of data from RAM. और दाशनी the मकसद शिरे of the L2 cache is to constantly read the slightly large quantity of data from the RAM. So the RAM ने की data पर large quantity किसी की read की. So these are available to the L1 cache और चाहते available चाहिए L1 cache available चाहिए और L1 चालू वर्क की बे CPU लेवल की. Next हमसे L2 L3 cache memory L3 का cache चाहिए L3 cache to work together with L1 and L2 to speed up computer performance. So the computer speed से performance तीस ठीक था. It is the largest cache memory among the three. उसका largest cache memory चीज़ है हमसे पहले 3 मानक किसी शेदा
L3 ده ټیک ده. It is a job to predict and prepare data for the process, so instruction or nearly not delay. Okay, so it's prepare data for the processor. What the data the چا د لپاره تیاری د پروسیسر د لپاره تیاری چې کوم ډیټا پروسیسر ته ځي چې هغه کې څه ډیلے نه راځي. faster than RAM but slower than L1 L2. د RAM نه سي faster دی خو د L1 او L2 کې شي نه سي دا slow وي. د ولې ریزن دا چې مطلب د سی پی یو نه سي په لک هاي مقدار کې څه شي لګل ریټینګ ته L3 کې شي open mode larger than L1 L2 motherboard CPU. A good cache system reduce delay and make the computer work faster. دا شنه good cache څه کوي reduce the delay and make the computer work faster than relying on RAM. خو د کمپیوټر کوم ورک چې دی څه کوي فاست کوي. Okay, next زموږ څخه دا register دی. نو register کوم زموږ څخه یو type of memory ده. Register is a large number of register inside the processor. Register small high speed memory unit inside the processor. اوس یو high speed memory ده inside چې available the processor ټیک ده. And their function is to temporarily store binary information and pass it to the other part of the CPU or main memory during program execution. د دې کار سره چې مطلب باینری انفارمیشن سکی سٹور کیا او دا کړه چې کله پروسیسر ته ضرورت وي چې به پروسیسر نور حصو ته سکی کنورټ کی. کامن رجسٹر ایکومولیٹر انسٹرکشن رجسٹر پروگرام کاؤنٹر میموری ایڈریس رجسٹر په دې کې زموږ کامن رجسٹر دی باقي انسٹرکشن رجسٹر دی پروگرام رجسٹر کاؤنٹر دی میموری ایڈریس رجسٹر دی وغیرہ د زموږ ایک ټایپ دی د میموری رجسٹر. سو they store operand input and result of operation. دا غشن د څه کې زموږ سٹور کوي operand मतलब इनपुट सही दा एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ठीक है. दा कम रजिस्टर सी दा मतलब या ऑपरेंड स्टोर कई कम दा सो मंगा इनपुट तो या समसा रिजल्ट से कई स्टोर कई. The number of register vary with the processor. More register mean faster instruction execution. वो शिकार number of register ज्यादा नो आगो बस CPU स्पीड से पर साइज की सॉरी पर स्पीड की बस या होना फास्टली. More register से मतलब दे faster instruction execution. And next we say register types ठीक ना register types. So बाकी number 1 चीज़ हम से accumulator register दे it can store the result of the arithmetic and logic operation. Status register से करके हम से show system status like carrying के zeros होड़ के या overflow चेकर overflow से मतलब दे चेकर information हम से मतलब addition suppose हम से addition की गई addition की मतलब suppose हम से information की गई information पे यो register की store की नो आज چې मतलब रजिस्टर से इंफॉर्मेशन स्टोर की चालक कला फिर से मतलब नेक्स्ट रजिस्टर इंफॉर्मेशन की कन्वर्ट की दर्शन जीरो रजिस्टर से मतलब है मतलब दबा से वन इंफॉर्मेशन स्टोर की एंड कैरी मतलब दर चीज से कैरी की चिकल एडिशन की मतलब वन चिकला एडिशन की एडिशन पर दौरान की वजह से सकीदा कैरी इंफॉर्मेशन पर स्टोर की ठीक ना. Instruction register hold instruction that currently being executed or the currently being executed instruction with a source of hold instruction register hold kai. Program counter keep the address of the next instruction to be executed. वो चेक ले CPU तो information नाजिटिंग ना नो by queue दस पसपम की यो queue पम की मतलब यो listing पम की one process one नगा चले information process दसी की assign की नो दसी की मतलब the instruction register से करके the program counter दा करके जो the information से कई hold कई. Buffer register temporarily store data incoming from the memory was buffer register कर दा मतलब कम information इधर से की temporarily store की ठीक है. It coming from the memory चीज़ कम चीज़ राजी चीज़ memory ना information राजी. Those are some complete types of registers. Thank you so much.